हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास मुकबंग में खाने के लिए है साउथ इंडियन फूड, और उसमें भी मेरे पास है सिर्फ इडली। बहुत सारी इडलीज़ मैंने रखे हैं खाने के लिए। साथ में है मेरे पास ये टमाटर की और स्पाइसी वाली चटनी, और है ये मेरे पास कोकोनट की चटनी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मस्त। और साथ में मैंने रखी है ये इमली की चटनी, और ये है मेरे पास सांभर, गरम गरम सांभर है। और दैट्स इट, इतना ही है। सादा पानी भी मैंने ले लिया है। बाकी साउथ इंडियन फूड बहुत कम मैं खाती हूँ, लेकिन मैंने आज फिर भी कोशिश किया है कि आज मैं यही खाऊं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सपोर्ट और शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि अभी मेरे को आप सबके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। बाकी स्टार्ट करते हैं खाना। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप सभी को किस किस को इडली पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इडली गले में फंसती है, इस कारण सूखा सूखा हो जाता है।
मेरा हो गया है गाइस, मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, ये 3 इडली मैं बाद में खा लूँगी। रात के 1 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे इडली खा रही हूँ, तो ज़्यादा हैवी खाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई रेसिपी लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके वीडियो सजेस्ट करें। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी जो रेसिपी है वो उसी पे लेके आऊँ। बाय।